Hello and welcome again to our channel of Ardent Educate Academy. Today's session is quite magical. Here we are gonna learn about magical math tricks. It's easy to remember and easiest to implement. So come on, without wasting any further time, quickly jump to our first trick. Let's start with our first and an easy trick, that is how to find the square of any number ending with 5. एकदम easy. Let's understand this with an example. 45 स्क्वायर क्या होता है? इट्स 45 इंटू 45. तो हमें सबसे पहले ये जो दो 5 है उसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है. सो इट्स 5 इंटू 5 इट्स 25. देन ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है उसके बाद क्या आता है? इट्स 5. सो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 4 इंटू 5, दैट इज 20. सो आवर फाइनल आंसर इज 2025. लेट्स अंडरस्टैंड द सेम concept with another example. That's 85 square. Again, 85 square is 85 into 85. 5 into 5 क्या होता है? It's 25. Then what comes after 8 is 9. So what's 8 into 9? It's 72. Our final answer is 7225. Now, what if there is a 3-digit number? Don't worry, same thing will apply. Suppose, what's 115 square? 115 square means 115 into 115. इसमें भी simply what will be 5 into 5? 25. And what comes after 11? It's 12. So what's 11 into 12? It's 132. So our answer is 13225. Hey, don't worry. This technique is just not limited to squares. समझाती हूँ. Suppose 74 into 76. What's the eligibility criteria? हमें देखना है कि जो राइट हैंड साइड के दोनों डिजिट्स हैं वो दोनों का सम 10 होना चाहिए एंड जो लेफ्ट हैंड साइड के दोनों डिजिट्स हैं वो दोनों सेम होने चाहिए. इफ दिस थिंग अप्लाइज सो हम वो टेक्निक कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. सो इधर क्या होगा? व्हाट्स 4 into 6? It's 24. एंड what comes after 7 is 8. So what's 7 into 8? It's 56. So our answer is 5624. Now, let's take few more examples. First, what's 93 into 97? So, what's 3 into 7? It's 21. And what comes after 9? It's 10. So, what's 9 into 10? It's 90. So, our answer is 9021. Then, 31 into 39. 1 into 9? Yes, it's 09, not only 9. And what comes after 3? It's 4. So our answer is 3 into 4, 12. Then 114 into 116. Again, what's 4 into 6? It's 24. And what comes after 11? It's 12. So what's 11 into 12? It's 132. So our answer is 13224. Now our second trick. That is how to calculate any number square in no time. Just know a square, 2ab, b square. Just by remembering this much, our problem is solved. For example, suppose 41 square. So, a square will be 4 square. 2ab will be, yes, 2 into 4 into 1. And b square will be 1 square. So 4 square means 16, 2 into 4 into 1 means 8 and 1 square means 1. So our final answer will be 1681. Let's take few more examples. Suppose 52 square. इसमें भी हमें क्या याद रखना है? Just a square, 2ab and b square. So इसमें a क्या होगा? 5 and b क्या होगा? 2. So what's a square? 5 square. And 2ab will be 2 into 5 into 2. And what will be b square? Yes, 2 square. 5 square क्या होता है? It's 25. 2 into 5 into 2 is 20. And 2 square is 4. तो उसके बाद वाला स्टेप हमारा क्या होगा? We will write 4. Yes, 2 will be carry forwarded in 20. Why? Because जगह एक ही डिजिट के, दो डिजिट की नहीं है. And 25. So our final answer will be 2704. क्यों? क्योंकि 5 और 2 एड अप हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल. 123 स्क्वायर. सो इसमें a क्या होगा? 12 एंड b क्या होगा?
3। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 12 स्क्वायर, 2 into 12 into 3 and 3 square. What's 12 square? It's 144. What's 2 into 12 into 3? It's 72. Yes. And what's 3 square? It's 9. Then इसमें भी हम लिखेंगे from back side only. 9. Yes, 7 will be carry forwarded. Very good. And 144. So what will be our final answer? Perfect. It will be 15129. Now it's time for our third and the last technique, which is what if we have to multiply any number with 11? एकदम simple. चलो understand करते हैं through example. Suppose 43 into 11. Firstly, we have to write this 4 and 3 to the extreme corners, and सबसे important चीज remember, number of space in between is should be equal to number between two extreme numbers plus 1. इसका क्या मतलब है कि 4 और 3 के बीच में जितने नंबर्स होते हैं क्वेश्चन में, उससे प्लस 1 स्पेस हमें छोड़नी पड़ेगी आंसर में 4 और 3 के. देयर आर नो नंबर्स इन बिटवीन 4 and 3, तो हमें इसलिए वहां पर एक स्पेस छोड़नी पड़ेगी 4 and 3. अब टू फिल दैट स्पेस व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू सिंपली, yes, we have to add 4 and 3 which is 7. So our answer is 473. चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं. 38 into 11. Again 3 and 8 to the corners with 1 space in between. Then we have to add 3 plus 8 which is 11. Yes, जगह एक की ही है तो जो दूसरा 1 होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा 3 के नीचे. सो आंसर क्या होगा देन? 3 plus 1 that is 4. सो आंसर होगा 418. परफेक्ट. चलो अभी अगर यही चीज 3 डिजिट में हो तो हम क्या करेंगे? सपोज 123 into 11. हम 1 और 3, yes 1 और 3 को हम कॉर्नर्स में लिख देंगे. देन हम स्पेस कितनी छोड़ेंगे? परफेक्ट 2. क्यों? क्योंकि नंबर एक है उधर क्वेश्चन में बीच में, तो वहां पे हम 2 स्पेस छोड़ेंगे. एंड टू फिल दैट स्पेस वी हैव व्हाट वी हैव टू डू इज 1 plus 2 that is 3, then 2 plus 3 that's 5. Great. Last example, 498 into 11. Again 4 and 8 to the corners with 2 space in between. Then 4 plus 9 ऐड करेंगे होगा 13. तो 3 वहां लिखेंगे एंड 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे. वाई? बिकॉज स्पेस एक की ही है. परफेक्ट. देन 9 plus 8 that's 17. अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? यस 5478. Why? Because 4 plus 1 is 5 and 3 plus 1 is 4. Now we are at the end of our session. Now I hope you will also apply this technique. Thanks for watching. See you in the next session. Yeah, till then, happy learning, and don't forget to follow, like, subscribe and support us to grow. Bye bye. Have a great day.